फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन भट्टा जौनपुर। आज हम लोग एकोनाइट 30 या 200 के डर सिम्टम डॉक्टर ईवी नैस के लीडर्स नैस बुक के होम्योपैथिक के डर सिम्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। फियर ऑफ डेथ स्पेशली, बट फियर टू क्रॉस द स्ट्रीट, फियर टू गो इनटू सोसाइटी, fear something is going to happen, ever present, undefinable, unreasonable fear. No remedy has it in such a degree as this one. It is the fear as much as the patient that makes the patient so full of that makes the patient so full of that agonizing restlessness. Fear of death आसानी दर्द एगोनाइजिंग तकलीफ दे उलझन के साथ बहुत ज़्यादा डरा हुआ महसूस करता है। डरा एस्थेनिक अल्बा 200 restlessness goes with extreme prostration and reduced vitality। आर्सेनिक अल्बा 200 में बहुत ज़्यादा कमजोरी और वाइटलिटी जीवन शक्ति बहुत कम रहती है, जबकि रस्टाक 200 में ऑन अकाउंट ऑफ द एचिंग पेन पूरे शरीर में दर्द के साथ which make him want to move for the temporary relief he gets from the movement। वो चलने से टहलने से थोड़ा राहत महसूस करता है। आर्सेनिक अल्बा 200 wants to move from place to place, जबकि आर्सेनिक अल्बा 200 में वो हर जगह घूमता है मजबूरी में, लेकिन इसको आराम नहीं मिलता है। But is not relieved। Neither Aconite 30 nor Arsenic alba 200 get such relief from movement। जैसा कि रस्टाक्स 200 में आराम मिलता है चलने से और टहलने से, उसमें एकोनाइट 30 और रस्टाक्स 200 में आराम नहीं मिलता है। और एटलीस्ट इन एनी सच डिग्री, कम से कम रस्टाक्स की तुलना में आर्सेनिक अल्बा 200 और एकोनाइट 30 या 200 में चलने से आराम नहीं मिलता। As a fever remedy, aconite as a fever remedy has been greatly abused। तेज बुखार में एकोनाइट बहुत ज़्यादा एकोनाइट 30 या 200 का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग होता है ओल्ड स्कूल में। Astonished at the result of homeopathic treatment so superior, so their so-called anti-phlegmatic, anti-phlogistic treatment, and finding aconite 30 or 200 so highly recommended and frequently used in inflammatory affections। तेज बुखार में 102 के ऊपर एकोनाइट 30 या 200 का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। Usually way of reasoning that aconite 30 या 200 could be squeezed into their pathological library and made to do service in all kinds of fever simply because it was fever।
pathologically livery and made to do service in all kinds of fever simply because it was fever. लीवर ट्रबल के तुलना में एकोनाइट 30 में बुखार ज़्यादा होता है, but they soon found that however useful it might be in some case of inflammatory fever, it was of no use in टाइफाइड फीवर में मियादी बुखार में एकोनाइट 30 या 200 ना फ़ायदा नहीं करती है जितना कि 102 या 4 बुखार में तेज बुखार में फ़ायदा करती. But they soon found that however useful it might be in some case of inflammatory fever, it was of no use in typhoid. Thus was generalization from a pathological standpoint again doomed to disappointment, as it always must be. Now many so-called homeopaths have fallen into similar error. इस तरह से बहुत से डॉक्टर इस तरह की गलती में रहते हैं. Aconite 30 or 200 did quickly cure in some cases having a high grade of fever. Aconite 30 or 200 हाई ग्रेड के फीवर में 102, 103, 104, 5 में ज़्यादा जल्दी असर करती. They even fell into the routine habit of prescribing this remedy for the first stage of all inflammatory affections and follow it with other remedies more appropriate to the whole case further on. If aconite 30 or 200 were the only remedy having inflammatory fever, perhaps we could do not better than to zigzag. अगर एकोनाइट इन्फ्लेमेटरी तेज बुखार में फ़ायदा करती है तो दूसरी दवा इधर उधर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती. The case to cure this way, Dr. Dhanam writes, aconite 30 or 200 is never to be given first to the subdue the fever and then some other remedy to meet the case, never to be alternated with other drugs for purpose, as is often alleged, of controlling the fever. एकोनाइट 30 अगर काम कर रही है तो दूसरी दवा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती बुखार उतारने के लिए. If the fever be such as to require aconite 30 or 200, no other drug is needed. If other drugs seem indicated, one should be sought with which meets the fever as well, for many drugs besides aconite 30 or 200 produce fever, each after its kind. True words, and as one reads them who has proved their truthfulness and remember the great author, he feels like exclaiming, being dead yet speaketh. Aconite 30 or 200 has two very important modalities which fright and dry cold air.
डर और ठंडी हवा से तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एकोनाइट 30 या 200 देने से तुरंत आराम होता है। वी हैव already noticed the value of the fever of Econite 30 or 200 as a symptom connected with acute inflammatory ailments. It is no less a remedy for ailments brought on by fright. इस तरह से कोई दवा डर में काम अच्छा नहीं करती है। Either immediate or remote. The patient has received a fright in the dark and is always afraid in the dark afterwards. From fright, vertigo comes on or fainting. डर की वजह से मूर्छा आ जाती है। ट्रेम्बलिंग, थ्रीटेंड, एबॉर्शन, कांपने की वजह से, डर की वजह से एबॉर्शन भी हो जाता है। और सप्रेस मेंस्ट्रुएशन या मासिक बंद होने की वजह से डर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। Jaundice may be induced by it and become chronic. There are other remedies for fright prominently, among which are opium 30 या 200, ignesia 200 या 30, paracetamol 30 या 200 देने से बहुत अच्छा लाभ होता है। Now in regard to dry cold air, जॉन्डिस के साथ अगर तकलीफ पुरानी हो जाती है तो उसमें ओपियम 30 या 200, इग्नीसिया 30 या 200 या टमलबा 200 या 30 बारी बारी से देने से बहुत ज़्यादा लाभ होता है। नाउ इन रिगार्ड्स टू द ड्राई कोल्ड एयर, ठंडक से अगर तकलीफ बढ़ती है तो ओपियम 30 या 200, इग्नीसिया 30 या 200 या टमलबा 200 देने से लाभ होता है। नो रेमेडी हैज़ मोर प्रोमिनेंटली acute inflammation arising from dry cold air. ठंडी हवाओं से जो तकलीफ, बुखार, खांसी, जाड़ा बढ़ता है उसमें एकोनाइट 30 या 200 देने से तुरंत लाभ होता है। आई लिव इन locality where croup abounds and have had abundant opportunity to verify this. मैं ऐसे लोकेलिटी में रहा हूँ जिसमें सूखी खांसी बहुत ज़्यादा मात्रा में सब पूरी लोकेलिटी में आ रही थी। उसमें दवा देने से एकोनाइट 30 या 200 बहुत ज़्यादा लाभ हुआ। प्लूरसी, निमोनिया एंड रूमेटिज्म also come under this head. धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।